अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है जॉब्स अनाउंस की हैं। पहले उन्होंने अनाउंस किया था भाई ग्रेड 5 से लेकर 15 तक जिसका टेस्ट IBA लगा, और उसके बाद SPSC ने भी म्यूनसिपल ऑफिसर की जॉब्स अनाउंस की हैं, टाउन ऑफिसर की जॉब्स अनाउंस की हैं। तो उनमें सिमिलरिटी ये है कि उनमें EDS पूछा जाएगा, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक EDS की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs बताऊंगा मुख्तलिफ़ किताबों से देख के, ताकि आपके लिए वो टेस्ट आसान हो जाए। आज ये हमारा पहला लेक्चर है MCQs बेस्ड, कि आप उनको याद करें, इनको देखते रहें। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, तो जैसे कि ये आप सीरीज़ देखेंगे पूरी इंशाल्लाह, तो आपका EDS। जी तो दोस्तों हमारा पहला जो सवाल है वो ये है कि भाई पोर्सलिन इज मेड फॉर मेकिंग क्रॉकरी विच इज इट इज सेल्फ बीइंग प्रिपेयर्ड बाय क्ले। इसका ये मट्टी जवाब है कि भाई क्रॉकरी जो है आप किस तरीके से बनाते हैं। क्रॉकरी जो है वो घर के सामान को कहते हैं। और दूसरा सवाल है सेरामिक्स कैन कंडक्ट हीट इलेक्ट्रिसिटी बोथ। ये सी ऑप्शन है, बोथ A और B, और D ऑप्शन है डू नॉट कंडक्ट बोथ। तो सेरामिक्स से जो है कोई भी कंडक्ट नहीं करता इनमें से। सेरामिक्स बियर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल ऑफ दीज। उसमें हार्ड भी होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, केमिकली अनरिएक्टिव भी होगा। हमारा चौथा सवाल है मटेरियल्स which can retain their strength above 550 centigrade are known as ceramics। ये इसका सेरामिक्स का जवाब है। उसके बाद आता है which of the following is a synthetic polymer। तो उसका जवाब है प्लास्टिक। सिंथेटिक पॉलीमर अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसके साथ प्लास्टिक जवाब देंगे। और उसके बाद है पॉलीमर्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड poly which means many and meros which means part। उसके बाद द इंजीनियरिंग मटेरियल्स known as plastics are correctly called polymers। के इंजीनियरिंग मटेरियल में प्लास्टिक को भाई आप क्या कहते हैं, कि उसको पॉलीमर कहते हैं। What is a combination of two or more materials that has properties that the components materials do not have by themselves। इसका जवाब है composite। Bakelite is a good insulator। Natural substances made up of long molecules are rubber and wool। Long pairs of atoms are linked by carbon। अगर इनमें से कोई भी आपको चीज़ जो है समझ ना आए तो आप कमेंट करके बताएं, मैं इसको दोबारा भी आपको बता दूंगा। Materials which does not allow any light to pass through them are called opaque materials। कि भाई उसमें से कोई भी चीज़ जो है बाहर ट्रांसफ़र नहीं होगी। Dash is a synthetic fiber used for making woolen cloths। तो इसका जवाब है acrylic। Synthetic fibers are made using petrochemicals। Petrochemicals is a raw material। Fiber obtained by chemical treatment of wood pulp is called rayon। Nylon is obtained by mixing cool
air and water. Dish is a polyester using for making bottles, utensils, films. तो PET आप इसको पेट भी पढ़ सकते हैं. Three-dimensional molecules with cross links are formed in the case of thermosetting process. Which is not a polymer. इनमें से कोई जो है पॉलीमर नहीं है. वो ग्लूकोज पॉलीमर नहीं है, बाकी एंजाइम, स्टार्च, टेफ्लॉन पॉलीमर है. Which of the following is a polymer? All of these. Natural rubber, proteins, glycogen. उसके बाद आता है if a substance such as heavy metals, pesticides accumulates in a body for a long time, it will be passed on to next consumer in food chain. Pets may not be destroyed through vaccine. Pesticide designed to kill birds are herbicides. ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है. आ सकता है कि पेस्टिसाइड जो है वो परिंदों को मारने के लिए कौन सी दवाई बनाई गई है, तो उसका ये है herbicides. Pest control by changing crop spacing, including crop rotation, running and weeding are part of the method of cultural control. इसका ये जवाब है. The three primary soil macronutrients are potassium, phosphorus and nitrogen. ये primary soil macronutrients होते हैं. ज़मीन में ये तीन चीज़ होती हैं: potassium, phosphorus and nitrogen. The process of accumulating higher and higher amount of toxic materials such as heavy metals within the body of animal is called bioaccumulation. इसके बाद if nitrogen is main element of fertilizers, then fertilizers are classified as nitrogen fertilizers. Increased ratio of chemical nutrients in ecosystem leads to eutrophication. Greenhouse gas which can be emitted from storage of nitrogen-based fertilizers is nitrous oxide. Nitrous oxide जिसको laughing gas भी कहते हैं. Organic fertilizers can be derived from all of these. All of these में क्या है? Plant material से, poultry material से, animal material से. DDT stands for dichlorodephényl trichloroethane. Which material may be considered as a semiconductor of element? इसका कार्बन है. In p-type material, charge carriers would be holes. What is the p-n junction formed? The point at which two opposite drop material come together. A commonly used pentavalent material is arsenic. The n-type material majority carries would be electrons, क्योंकि electrons पे negative charge होता है. Intrinsic semiconductor material is characterized by a valence shell of how many electrons? 4 होते हैं इसमें भी.
Organic farm is a technique of raising crops through the use of all of these. रेजिस्टेंस वैरायटीज होंगी जो ज़मीन में टिक सकें, बायो फर्टिलाइजर्स, minerals. The quickly available source of nitrogen to plants are ammonia fertilizers. IPM stands for Integrated Pest Management. तो दोस्तों आज का जो ये पहला लेक्चर था तो इसको ज़्यादा लंबा भी नहीं करते हैं, ये सिर्फ MCQs जो है पहला लेक्चर था। आप खुद भी पढ़ें, खुद भी आगे मेहनत करें, और अगर आपको जो है वो ये मेरी वीडियो सही लगती है तो भी कमेंट करके बताएं। अगर इसमें कुछ फ्लॉज हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं फ्यूचर में जो है आपको इससे भी ज़्यादा क्वालिटी वाला मटेरियल दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।